Good morning. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay. Then in the previous class, we are basically discussing about the what we are discussing about. Who can say? Regular Who expression. can Regular say what expression. regular expressions? And today again we'll start from the regular expressions. We'll go for some of the examples. Then we'll move for the other things. That how we can convert a regular expression from one form to the other. That is the topic of discussion today. Then any one of you can say what do you mean by a regular expression? I ask any one of you can The say what do you mean declarative by way a of the declarative way of representing a regular language. मुझे जो मैं बोला था वो मत बोलो मुझे सिर्फ समझा सकते हो आशुतोष रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है what do you mean by that regular expression I need to understand you think me in your place and you stay in my place and tell me सर जो रेगुलर लैंग्वेज को बना के हम जो भी कुछ ऑपरेंट को यूज करके करते हैं उसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते that is any expression is made to represent a language known as regular language yes or no हैं. yeah that is called a regular language जो लोग लेट में आ रहे हो क्यों लेट में आ रहे हो टाइम पे आओ अलाउ नहीं करूंगा अच्छा होगा इट्स बेटर टू कम ऑन टाइम गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मगर कोई भी लेट में मत आओ टाइम पे आ जाओ बीच में मुझे स्क्रीन मिनिमाइज करके फिर ओके से सर रीओपन करना पड़ता है फिर एक आ गया इसने बोला कि then I have presented something is it visible to you Yes, sir. यस सर then going for that presentation it's showing you that we'll go for regular expressions then there are interconversion between languages and regular expressions or I can say the finite automatons into regular expressions and regular expression into finite automatons then we will go for their property and then we will finish the chapter then going for these concepts if you are leaving the meeting coming going coming going it's okay then going for these concepts I can say that yesterday we have discussed up to what do you mean by a regular expression and we have gone for some of the basic regular expressions
Is it clear? Whatever I am saying, it is clearly audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Then sir. these are some of the regular expressions that we have gone for in the previous class. Now moving next, what I can say that there are certain rules that you have to obey while you are writing the regular expression. Then what are the rules that we have to follow? Then moving for the concept, I can say that R is a regular expression and R can be represented in any one of the form that is represented within this table. And I think the table is visible to you, all of you. Is it visible? Yes, sir. Also, I'm saying I will not give extra time for writing. If you want to prepare your own notes, then you can write. And to make a better note, I am sharing many PDFs. You can go for the notes preparing in your own way. That's the best thing. Okay. Then going for the concept, I can say that you can see the table where I can say if I am writing only 5, it means also a regular language, sorry, regular expression. And the regular language represented by this phi, the regular language represented by this phi is the empty language, or I can say null language. But if I am writing epsilon, it is not same as phi. The reason is in case of phi, it is a language which is not existing at all. And if you have still a little bit of doubt, I'll design the finite automatas for these regular expressions. Then I think it will be more clear for you. Okay? Then moving for this epsilon, epsilon is not empty language. It is containing a string. What is that string? The string is null string. And if I am writing a, this A means it is a symbol from sigma and it is representing a language A. That means if I'll say construct a finite automata for the strings A, for the string A, can you design it? Can you construct a finite automata that accept a string A on the alphabet set sigma is equal to A? Can you design it? Yes, sir. Yeah, yes, sir. मुझे सिर्फ बोलो कितने स्टेट्स होंगे उसमें? दो. दो स्टेट. कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ए दे दो, काम खत्म. समझ पाए? That means A is a regular language for Yes. which I can write a regular expression. Okay, understood? Then union of two languages is also regular, you know. That is, we have gone for this property in the closure property. The union of two regular languages is regular. That is language of R1 and language of R2 when made union, that is also regular. And for this regular language, LR1 union LR2, where R1 and R2 are two regular expressions. R1 union R2 is the regular expression. For example, I am saying following this formula, that means for a language A, there is a automaton A. Sorry, there is a regular expression A. Similarly, for a language B, what will be the regular expression? For a language B, what will be the regular expression? B. C. B. And if I'll go for their union, then what will be the result? A or B? A or B? Yes, sir. That means you can design the finite automata also
from Q0 to Q1A, from Q0 to Q2B, and Q1 and Q2 are two final states. And hence, here the regular expression for that is A plus B. That is R1 union R2. Or I can write R1 plus R2. Or I can write R1 vertical bar R2. These concepts I have discussed before or not? This table. कल के क्लास में बोला था, शायद नहीं बोला था. No, sir. No, sir. Okay. नो सर Then, नहीं बोले. ठीक. सिमिलरली अगर ए और बी को कॉन्कैटिनेट करूंगा तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगा कि नहीं? होगा. कैसे मालूम पड़ा? Sir, property. क्या प्रॉपर्टी है? एक लाइन में मुझे आंसर दो. Sir, closure property में सब आ रहे हैं. Union intersection. अरे concatenation of two regular languages is regular. ये होता है स्टेटमेंट. Okay, sir. इसे मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, याद है? I have gone for the proof also. Then moving for this, here I can say that is if R1 and R2 are two regular expressions, then their concatenation is also regular, and regular expression is R1 dot R2 or R1 R2. Similarly, for clean closure, it will be here you can write R1. By mistakenly, it is written R in the last two lines. This is L R1, this is L R1 because here I have mentioned R1. And if you are mentioning here R, also mention here R. Okay. Then L R1 star is written as R1 star. And if I am making a language within a bracket, it means the same language. That is the regular expression R1 within a bracket is used for the same language L of R1. These are some of the rules. Repeating again, here these R can be changed into R1 or these R1s can be changed into R. That is up to you. Nihar Ranjan Pillai. Nihar, please come on time. Nihar, are you there? Nihar Ranjan Pillai. Nihar Ranjan Pillai. यस सर. कितना लेट हुआ है? 20 मिनट चला गया, थोड़ा टाइम पे आओ. ओके सर. Then moving next. I think this one is finished. All of you have understood. Reply. Yes, sir. यस सर. Then for another thing, I can go for another rule also. I am saying you. These are some of the rules I have not mentioned there, but I am saying you. That is, these two rules are there, the fourth and fifth line, but these are not there. That is, phi star is always epsilon. Epsilon star is always epsilon. Anything concatenated with phi is phi. Repeating again, listen carefully. Phi star is epsilon. Epsilon star is epsilon. Anything concatenated with phi is phi. Anything union with phi is the same language. Anything concatenated with phi is phi, as I told you just before. Anything concatenated with epsilon is the same language. Okay. These are some of the rules you may follow, and again I will go for the discussion of these rules. Clear? Clear?
Then moving for these operators, what are the operators what we have discussed? We have gone for 3 operators, one for union, next one is for concatenation, and the next one is for star. And I think I have gone for the precedence of operators. कल बोला था ना precedence of operator? Yes, sir. Then here it is explaining about the precedence of operator. तो मुझे एक लाइन अभी जितना बोला हूँ समझ पाए हो? All of you are clear whatever I have explained till now? Please reply. Yes, sir, mostly. yes ज्योतिष एस बोल रहे हो तो ज्योतिष तुम्हें पूछ रहा हूँ. My question Yes. is, for every language, can I write a regular expression? No, sir. It depends whether it's accepted by automaton or not. For every regular expression, can I represent a language? Yes. For yes. Why? So, cause it accepted by finite automata, so we can Very write the good. language. Actually, the answer is, if we can write a regular expression, then it's a regular language. That means it is a language. Regular language is also a language or not? That is the case. Yes, sir. Here the first yes and the first line mentioned that for every regular expression there is a language. And the second one is the converse is false. That for every language I can't say it is regular, because if it is not regular, then there is no regular expression. Okay? For every regular expression there is a language, because the language is regular language. But for every language there is no regular expression, because the language may not be regular. If it is regular, then only there is regular expression. Okay. Then moving next, I have gone for a lot of examples before saying you about the regular expression. That is, what do you mean by the details I have not explained? I have gone for only the examples to make you an idea that how a regular expression actually looks like. And now I am explaining the same concept again. Then the regular expression 01 means language is 01. It is a single element. Getting it? These are not two elements, single element. Yes, Why sir. I am saying it is a single element? Because in a set, all the elements are fill the blanks. In a set, all the elements are, Separated by comma. but here there is no comma. That means it is a single element. That means if there is an element A, single element if there is an element A, then for that the regular expression is A. Here the element is 01. That's why the regular expression is 01. If the if the language is 01 or 1, then the regular expression is 01 plus 1. If the language is 0, 1, 1 and 1, I can write it as 01 plus epsilon 1. Can I write this one in some different way? The regular expression? Anyone? Diksha? Diksha, are you there? अरे ऑन करके सो गई क्या? सत्यनारायण, ये भी भाग गया. सब ऑन करके मॉर्निंग क्लासेस हो जाते हो. ओके. राहुल, राहुल सेनापति. Yes, sir. तो मैं जो बोल्ड किया हूँ वो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसे किसी और वे में लिख सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ ना हमेशा सही. हाँ बोलो. Sir, you can write epsilon plus 01 into 1. इससे पहले वाला देखो, देख के बोलो. 0 plus 1.
1 is 0. No, sir. अरे अगर ये 0 1 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 1 + 1, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ? No, sir, नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? इसे भी लिखा जा सकता है 0 1 1 + 1. तो वही पूछ रहा हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है. आई कैन Yes, राइट sir. हियर एज 0 1 1 + 1. तो इसे किसी और वे में लिख सकता हूँ, बोलो. कैन आई राइट इट इन डिफरेंट वे? 0 1 plus epsilon. 0 plus epsilon bracket 1. Yeah, 0 plus epsilon. You can see here. Always in mathematics, you take the common into left hand side. But here the common can be taken from left as well as right. And hence, here you can see 0 1 1 and 1. If I write 0 1 1 + 1, taking the common from right, what is there here in place of 1? Epsilon. And in place of this is Epsilon 0 1. 0 देखो 1. देखो मैं अटैच करके दिखाता हूँ. इस 1 को यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लगा दो, क्या होगा? 0 1 1. फिर इस 1 को यहाँ से उठाओ, इप्सिलॉन से लगा दो, क्या बनेगा? 1. 1. तो टोटल क्या बना? 0 1 1 प्लस. 1 1 plus 1. तो इसे कैसे वैसे बनाओगे? इस 1 को कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0. 0. 0. यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? Epsilon. Epsilon. That is 0 Epsilon. plus epsilon bracket के आखिर में 1. But remember one thing, why I am saying a lot. The reason is you can't write this one in the left. क्योंकि लेफ्ट में लिखने का मतलब क्या? What do you mean by writing the one in left? It will concatenate in the left. Getting the meaning? If I write here 1 followed by 0 1 plus epsilon, what do you mean by that? The string will become 1 0 1 plus 1 instead of 0 1 1. Understood what I am saying? Yes, sir. If I write this one in the left, the string will become 1 0 1 followed by 1. That is 1 0 1 plus 1. समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या होगा लेफ्ट में लिखने के लिए? Yes, sir. Understood? So similarly, I can go for this as 0 1 0 epsilon plus 1. You can see here 0 epsilon is 0. 1 epsilon 0, that is 0 1. 0. This one is a little bit incorrect. Typing error. What it will be the result? कौन बोलेगा? Regular expression क्या होगा? ये गलत है. कौन बोलेगा सही क्या है? ये वाला मैं पहले भी करवा चुका हूँ. कौन बोलेगा? Who can say what is the result? Sir, epsilon 0 1 1 0 1 0 1. 101 यहाँ पे कहाँ आएगा? इसमें तो स्ट्रिंग में 101 है ही नहीं. तो इसमें बोल रहा हूँ. इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? What will be the regular expression for this? What will be the regular expression for this? So ये epsilon 1 0 1 0. Epsilon
एक काम करो, 1 मैं इजी वे 0 पे and यस 1. मैं इजीएस्ट वे देता हूँ, इस सबको प्लस लिख दो, एप्सिलॉन +1 +0 +01। कल जैसे बोला था, याद नहीं है? मैं बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। सर कल ऐसा ही एप्सिलॉन बोला था। प्लस 0 प्लस 1 कल 0। ऐसा बोला था ना, ये जो मेथड कॉमन लेके लिखने के लिए, तो कॉमन लेके लिख सकते हो, लिखो जैसे बोला था। कल सब बोला हूँ, आज भूल गए। याद आ रहा है? एप्सिलॉन ए बी डबल ए बी बी ए बी बी, तो इन सबको लेके लिखा था। कैसे लिखोगे? मुझे लिख के बोलो वो आंसर। उसका रेगुलर एक्सप्रेशन गलत लिखा है, सही क्या होगा? This one is incorrect. So what will be the right one? सर एप्सिलॉन +0 +1 0, फिर उधर होगा वही जो था एप्सिलॉन +1। वो सही बोल रहा है? अगर तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे होगा एप्सिलॉन +0 प्लस कॉमन ले लो। मैं बोल रहा हूँ, बोल के मुझे आंसर बोलो जल्दी जल्दी। जल्दी। तो सही है कि गलत है, वो भी मुझे डाउट है, इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। कौन बोल सकता है इसका क्या होगा? Sir, epsilon plus 0 1 plus 1 0 0. 100 कहाँ आएगा यहाँ पे? अरे स्ट्रिंग का लेंथ मैक्सिमम 2 ही है, 100 कहाँ आएगा? हाँ, तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिंग का लेंथ देखो। अच्छा अच्छा. सिंपल वे में बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों को देखो, 10 01 एंड 10, इसमें से क्या कॉमन जाएगा? अगर इन दोनों को पास पास रखूं, 1 और 10 को, 1 कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा? एप्सिलॉन प्लस 0। तो जाएगा कि नहीं? Yes, अगर sir. मैं 0 को इसके It पास will. रख दूं, 0 को 0 0 के पास रख लूं, तो 0 को कॉमन ले लूं, क्या आएगा? एप्सिलॉन प्लस 0। एप्सिलॉन +1। तो दोनों के केस में अगर एप्सिलॉन प्लस 0 को कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा? एप्सिलॉन प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ऐसे ही बनाते चलो, ये टास्क रहा।
इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन तुम मुझे बना के दोगे। मुझे एक क्वेश्चन मिल गया। अच्छा है, मेरे टाइपिंग एरर से मुझे ही क्वेश्चन मिल गया। अगर नहीं होगा तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है। हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर। दिस इज अ टास्क फॉर यू। If not possible by you people, don't worry about that. Ask me, I will solve that. But if possible by you, Yes, solve and tell me the answer. I will be so happy. Then I am moving for some examples. क्योंकि छोटा क्लास है, 1 घंटे का टाइम ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इतना टाइम वेट नहीं कर सकता कि तुम लोग ज़्यादा सॉल्व कर सको, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। Then I am going for some of the examples containing a single one. That means there will be a single one, and before that and after that anything may be there. That is, any number of zeros and ones may be there, and that's why I can go for like this. समझ पाए? एक ही वन है तो उस एक वन को मैंने ले लिया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बोलना, मैं पेंट में बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कॉन्टेनिंग ए सिंगल वन। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? yes, sir. तो कॉन्टेनिंग ए सिंगल वन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वन इज 1. 1. देन आई हैव रिटन दैट 1. तो 1 के बारे में तो मैंने बोल दिया। जीरो कितने होंगे? हाउ मेनी जीरोस विल बी कुछ भी देयर? हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो 1 के बाद आएगा और पहले आएगा। बाद में आ सकता है, पहले भी आ सकता है। It can come after the 1 or it can come before the 1, and any number of zeros can come, and that's why I can write 0 star. 0 star means any number of zeros including epsilon itself. That means only one may be there without any zeros. Understanding? समझ पाए? Yes, sir. Then if I am going for a question, that is, there will be at least one. This is a single one, exactly. This is the case where there is at least one. So what do you mean by this at least case? The number of 1 is minimum 1. I have written the minimum string, that is 1. The more number of ones may be there previously, maybe there after. And thinking about zeros may be of anything. Then here sigma indicates whatever elements existing in the alphabet set. Let I am saying for your example, I am saying the alphabet set I have given 0, 1. Then what will be the regular expression? If I have given the alphabet set is 0, 1, then what will be the regular expression? 1. 0, 1 star. Asutosh, your network is having some problem. It's not audible. शीर्षक बोलो, क्या आंसर होगा? If alphabet set is 0, 1, then what will be the Shikhar? Please answer. If the Yes, sir. alphabet set is 0, 1, then what will be the answer for this one? This question. W such that W has at least one. If the alphabet set sigma is 0, 1, then what will be the regular expression? At least one means, sir, at least one is required. There may be zero also, and there might be also one. At least one is required. There might be more ones and zeros also. I understand. I am asking about regular expression. What will be the regular expression? Sir, it might be 1 1 1 or 0 1 1 or No. 0 0 1, Regular something like that.
मैं string, I am not asking about string, I am asking regular expression क्या होगा? If sigma is 0 1. अभी तो लिखा हुआ है फिर भी नहीं बोल पा रहे हो. सर 0+1 ब्रैकेट के अंदर, Yeah. उसके बाद फिर 1, फिर अनदर ब्रैकेट एंड देन 0+1. तो ये स्टार किधर जाएगा? 0+1 का मतलब क्या है? आइदर ए 0 और 1. तो एक ही आया. तुम्हें क्या पता है एक से पहले एक ही एक या 0 रहेगा? सर 0 स्टार एंड सिंगल 1. एक ही रहेगा कैसे? एक एक तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया. This one is the at least one. And here I will write in place of sigma what I have given you. What is sigma? 0 1. That means here I will Yes, sir. write 0 plus 1 star followed by 1. Again I will write 0 plus 0 1 plus 1 star. Okay, sir. star means any number. Understood? Sir. Yes, sir. Okay. Very good. Then moving for the next question. It contains a string 001. It is similar to 1. It is similar to this question, first question. That is the substring is 001. I have written it. Then before this substring, anything may be there. After this substring, anything may be there. And for anything, I have written sigma star. And here, if the alphabet is 01, what will be the answer? Diksha, have you come back? और अभी भी नहीं हो? दीक्षा कुमारी Yes, sir. बीच में तो चली गई थी, कहीं रिप्लाई नहीं दे रही थी. अभी बोलो इसका क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन? अगर सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 हुआ तो माइक बंद करके चली गई. नहीं सर है ट्राई कर रहे हैं. ट्राई करने में से अभी तो आंसर बोल चुका हूँ, फिर क्या ट्राई करोगे? मतलब सुन नहीं रहे हो? रेहान, आर यू देयर? सर 0 plus 1 या star या 001 या then bracket 0 plus 1 या and star. स्टार. If the alphabet set is 0 1 2, then What sir? if the alphabet set sigma is 0 1 2, then फिर चली गई. ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ. अरे try to understand. If the substring is 0 0 1 and I am saying sigma is 0 1 2, so yes, this substring must exist. But before and after to this, anything may exist. Anything means any symbol from the alphabet, and that's why it is 0 1 2 star. That is 0 plus 1 plus 2 whole star followed by 0 0 1 and then 0 plus 1 plus 2 whole square. That means instead of sigma, I can write all the elements of the alphabet set again. Understood now? Hello. Yes sir. Here there is no alphabet sets mentioned, and that's why I have used the word sigma. Why I have used the word sigma, you understood? I don't know the alphabet. How can I write the elements? But if the alphabets are known, then I can go further. The next question. Every 0 is followed by at least 1 1. The first case I am saying 1 star. That means there is a possibility that no 0 is there. Yes or no? Yes, sir. Yes. And for that I have written only ones are there. In that case, what is the value of this? Epsilon.
How it will get epsilon? Because I have written star, and you know that star includes the first element, that is power 0, that is epsilon. Have you remembered that? Star means it includes epsilon. Yes, sir. That means if this one is epsilon, then it is 1 star only, and 1 star means only 1. No 0. 1 1, double 1, triple 1, 4 1, 5 1, infinite number of ones may be there in a string. But the condition is, if 1 0 comes, then it will be followed by a single one minimum. It may be a single one, maybe a double one, maybe a triple one. And hence I have written this plus. Then who can say what is the difference between plus and star? I'm asking the name. Nia Ranjan Paley. Yes, sir. What is the difference between a star and the superscript plus? If you know, answer, otherwise say I don't know. Don't waste I time. don't know, sir. Attentively suno. Hakun, Hakun, are you there? Yes. Can you answer? Bye bye. Krishna, can you answer? Sir, who is Krishna? दो कृष्णा है क्या? Krishna Samal, Yes, sir. can you Sir, answer? star means repetition of that element, and plus means sir पता नहीं. वही तो मुझे जानना था डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस निकला नहीं. Nikita, Yes, sir. do you know the answer? Sir, star means 0 or more number, and plus means 1 क्या and more क्या 1 or more क्या? elements. No, 0 or more times repetition, and this is 1 or more times repetition, not number, repetition. The difference क्या है बोल रहा हूँ यहाँ पे. 1 plus means 1 minimum एक बार रिपीट होगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एटलीस्ट 1 1. तो एक 1 होगा, 2 1 होगा, 3 1 होगा, 4 1 होगा. Number of ones may be there. Minimum repetition of 1 is 1. That is 0 is followed by minimum 1 1. But इस टोटल ब्रैकेट का स्टार क्या मतलब, पहले ये टोटल ब्रैकेट 0 हो गया, उसके बाद इसके अंदर जो भी है वो एक बार रिपीट हुआ, इसके अंदर जो भी है वो दूसरी बार रिपीट हुआ, इसके अंदर जो भी है वो तीसरी बार रिपीट हुआ. मतलब यहाँ पे एक 0 टाइम्स रिपीटेशन भी हुआ. अगर 0 टाइम्स रिपीटेशन होगा उसे बोलते हैं इप्सिलॉन, जो कि मैंने पहले समझाया, दैट इज 0 है ही नहीं, मतलब 0 नहीं है कि 1 भी नहीं. Let I am giving you an example. I am giving you a string 1 1 1 1. This is accepted by this language because here there is no 0. And if I am giving you a string 0 1, that is also accepted because this part becomes epsilon. 0 1. Let I am giving you a string 0 1 0 1 1. वो भी accept होगा क्योंकि 0 then once occurrence, then फिर से स्टार लगा है मतलब रिपीट होगा. क्या होगा, 0 then 1 twice occurrence, that is 1 1. That is 0 1 एक बार हुआ, दूसरी बार रिपीट करूंगा तो 0 1 1 हुआ, तीसरी बार रिपीट करूंगा फिर 0 1 आ सकता है, 0 1 1 आ सकता है.
कुछ भी आ सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ वन इज मिनिमम वन, मोर देन वन इज अलाउड। समझ पाए और डाउट रहा किसी का? डाउट रहा फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ गए तो अच्छा है, बोलो सर प्लीज एक रिप्लाई। बार और बता दीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। Then I am saying about some of the strings accepted by this automaton. The string is 1111111. In that case, this right hand side is epsilon, because star का operation का मतलब है zero or more number of occurrence, and zero occurrence का मतलब है no occurrence, that is epsilon. That means अगर ये right hand side part वाला epsilon हो गया तो बचा क्या है ना, one star. वन स्टार का मतलब जितना भी वन हो सकता है, ये भी एप्सिलॉन हो सकता है। अगर एप्सिलॉन होगा या फिर वन होगा या फिर दो बार वन होगा या फिर तीन बार वन होगा, वो एक्सेप्ट होगा। इन दैट केस दिस राइट हैंड साइड बिकम्स एप्सिलॉन। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड एप्सिलॉन हुआ तो इसमें जो रहेगा वो होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 0 1 फॉलोड बाय 0 1 1। पहली बार बना 0 देन 1 प्लस मतलब मिनिमम एक बार, तो एप्सिलॉन नहीं हो सकता। 0 1 देन अगेन इट विल रिपीट बिकॉज स्टार लगा है। अगर दूसरी बार जाऊंगा तो ये होगा 0 देन 1। कितनी बार पता नहीं क्योंकि प्लस लगा है, एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, सोच लो दो बार हुआ, देन 0 1 1 हो गया, फिर से रिपीट हुआ 0, ये हो गया 1, तो यहाँ पे एक बार हुआ तो 0 1, फिर से रिपीट हुआ 0, तीन बार हो गया 1 1 1। मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब one or more occurrence, that means it will exist once or it can repeat number of times. This one can repeat once or can repeat number of times, but this star means it can repeat 0 times or number of times. And if I am making it 0 times, only one will be considered. If I am making this 0 times, then only this part will be considered. And if I am making both parts are 0 times, that is epsilon, then the string is epsilon, that is also accepted, because I have not said anything about that. I am saying if there is a 0, it must be followed by a 1 or more number of times. This is how much by, or please repeat करो। Got it, sir. Yes sir. Then moving next, it is W. So that W is a string of even length. Even length का मतलब क्या होता है? Length is 2. That is, here I have written याद नहीं आ रहा है। लेंथ एग्जैक्टली 2 कल बता के दिया था, आज भूल गए, यहाँ पे बना के दिया था कल। लेंथ एफ बी, सॉरी लेंथ एफ बी बोला, ओवर सिग्मा एफ बी, where length is दे रहा है। नो सर आपका मतलब बंद हो गया था बीच में। स्ट्रिंग सामने
Hello. 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 Yes. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Now audible na? Yes, sir. Now it's audible. As I had told yesterday, for length exactly 2. This is the same way we'll do. That is, there I have gone for A and B 2 cases. Here I have written sigma. Sigma followed by sigma. By that, what I will get? ये कल का example है, length exactly 2. Then if I will write A, B are sigma here. The alphabet set is A and B. I will write directly sigma, sigma. Then what we will get? Strings of length exactly 2. 2. 2. तो इवन का मतलब क्या होता है? 2 का repetition or not? 2, Yes. 4, Yes, 6, sir. 8, Yes, sir. So star. and that's why I have given a star. And that's why I have given a star. Star. Understood? Understood? Similarly, you can go for these are the some of the questions and answers. Go for this. And any doubt you can ask. See and ask. Write down also. See and ask. Any doubt. These are the same type of things. फर्स्ट में इतना सिग्मा क्यों लिया है Yeah? वो फर्स्ट वाला द लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 3 में सिग्मा क्यों लिया हम लोग 3 टाइम्स अरे अभी तो उससे पहले वाला समझा है, क्या समझे यहाँ पे? 2 बार क्यों लिए थे? अभी समझा है, वो ये वाला भी तो मैं कल बना के दिया तुम्हें। सब सुन नहीं रहे हो क्या? यहाँ पे 2 लेंथ के लिए बना के दिखाया। दिस वाज फॉर लेंथ एग्जैक्टली 2। इसका स्टार लगा दिया तो 2 बार हो गया इवन। तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है? दिस इज फॉर लेंथ एग्जैक्टली 3। उसका रिपीटेशन मतलब डिविजिबल बाय 3। Yes. तो 2 का अगर समझ रहे हो तो 3 तो अपने आप आएगा, मतलब सुन नहीं रहे हो तुम लोग। प्रॉब्लम वही हो रहा है। सुनो सही से, डाउट है तो बार बार पूछो। जितने बार पूछोगे उतने बार समझाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर बिना समझे मत बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में एवरी जीरो इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन हाँ सर उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन कैन इट बी 1 स्टार 0 1 स्टार एंड 1 स्टार मैं वैसे तो अभी बोल नहीं सकता, तुम चैट बॉक्स में टाइप कर दोगे तो मैं देख के सोच सकता हूँ।
अभी फटाक से पूछोगे तो मुझे वो मैं बता भी नहीं सकता सुन के, ओके जो सर। सुनूंगा उसे इमीडिएटली सोचना इतना इजी नहीं होता है, इसीलिए बोला कि लिखने के बाद देखने के बाद ही कुछ बोल सकता हूँ, उससे पहले नहीं। Okay, please write down these things, these regular expressions, and I'm sending you the link of today's exam. Please attend the exam, and also every class I am saying you that don't repeat. मतलब जो लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो वो लोग अटेंड करो क्लास, बिना अटेंड किए मत दो, मगर तुम लोग वही कर रहे हो, मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। तो ज्योतिष एक बार तुम्हारा बोलोगे वो जो ग्रुप मेल आईडी? ग्रुप मेल आईडी सर, एक मिनट सर, मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ सर, एक मिनट। नहीं जी, एक मिनट रुको, वरना मैं यहीं से तुम्हारा इसी चैट बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ। यस यस सर। दैट विल बी बेटर। You can go from this chat box. Okay, and within the same time also I am taking the attendance. Please respond to the attendance. And one more thing, have you written these questions and answers? Have you written these regular expressions? यस सर। Yes, sir. Can I change the slide? सब लिख लिए, slide change करूं? Hello, reply. यस सर, यस सर, कर सकते हैं। यस सर, कर दीजिए। ये कुछ और है, इसे भी लिख के रखो, डिस्कस में कर लूंगा। श्रीराज समाधान, मुझे जितना लग रहा है ये सब तुम्हें आने वाले क्वेश्चंस हैं और आंसर। और अभी फिलहाल तुम लोग एग्जाम अटेंड कर लो। आई एम गोइंग फॉर अटेंडेंस, यू गो फॉर द एग्जाम। लास्ट 5 मिनट दूसरा क्लास भी होगा, अभी फिलहाल एग्जाम अटेंड करो, हम कल यहीं से शुरू करें। बी क्विक टू आंसर।
Till now, only one response received. Be quick. And by the time, just respond to attendance. Abhijit, Ankit, Present, sir. Present, Present, sir. sir. Sir, Partha Ankit Sarathi, also present. Present, sir. दिया हूँ. Tanya, आशुतोष, यस सर. जिन लोगों का एग्जाम हो गया, अटेंडेंस हो गया, वो लोग जा सकते हो. हेलो सर. निखिल, जिन लोगों का एग्जाम और अटेंडेंस दोनों हो गया, वो लोग जा सकते हो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. ओके. सर, am निखिल, I audible? या Okay, sir. Thank you. निखिल, राहुल सेनापति, Yes, sir. Present. राहुल सेनापति. Yes, sir. Yes, sir. Present. ओके. आयुष्मान, Present, sir. चंद्रकांत, आतिश, Present, sir. Chandrakant. ज्योतिष, Sir, Present, sir. Present. Jyotish Naik, present. Present, sir. प्रत्युष, Present, sir. आतिश एब्सेंट. Then Disha, Anup, Hariom, Yes, sir. Prithviraj, Sandeep, Sandeep, त्रिविक्रम, अपना स्पीकर ऑफ करो. त्रिविक्रम, मालूम है नहीं चाहिए, हो गया. स्मृति, Yes, sir. राजीव, Present, sir. स्वीकृति, Present, sir. संबित, Present, sir. कृष्ण मुरारी, Present, रेहान, sir. रेहान, Present. राहुल, दिव्य प्रकाश, काकोन, हो गया. Present, sir. Present. कौन? Divya Prakash. Sir, Kakon present. काकोन प्रेजेंट दिया है. आशुतोष, जिन लोगों को क्वेश्चन पूछा है, मेरा Present, नाम है sir. आज. Sir, Asutosh, present. जगत ज्योति, शिखर प्रेजेंट. सौम्य, Present, sir. शीर्षक, Present, sir. अनन्या, श्रुति नम्रा, Present, खुशी, sir. खुशी, Present, sir. निहार, Present, sir. शिबलू, शिबलू, Present, sir. निकिता, Present, sir. कृष्णा, Present, sir. अभी, Present, sir. ली, Present, sir. प्रियव्रत, Present, sir. दिव्य दर्शन, Present, sir. आलिसा, Present, sir. आदित्य, दीक्षा, Sir, Aditya, अमृत, present, sir. Present, sir. अमृत, Present, sir. Sir, Aditya, present. आदित्य दिया हूँ. दीक्षा प्रेजेंट है? Yes, sir. नहीं है. हाँ. अमृत, Yes, sir. कौन बोलो? दीक्षा और अमृत? Sir, Amrit. राजेश,
दिस इज प्रेजेंट है तो दीक्षा प्रेजेंट है और एब्सेंट है? दीक्षा सर प्रेजेंट ठीक है, दोनों एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? राजेश, सत्यनारायण, Present, sir. उज्जवल, Yes, sir. Present. उज्जवल, रूपम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prajal present. ओके, हो गया। बाकी जो लोग प्रेजेंट हो, सोच रहे हो कि नहीं हुआ है तो चैट में छोड़ देना, मैं देख लूंगा। अभी तक रेस्पॉन्स आया 27 responses Thank you, only. Be sir. quick. Yeah, thank you. You may leave. But those who have not responded, please respond within 10 minutes. Thank you.